इसरो का एक पूरा इतिहास है, सुनिए क्या कहा जा रहा है। Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan-3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan-3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan-3 for its further journey towards moon. Before that, let me introduce the team behind this mission, the mission director, Mr. Mohan Kumar, and also the project director of LVM-3, and we have also the mission director for the Chandrayaan-3 craft, the project director of Chandrayaan-3, Veera Muthuvel. So over to them, Mohan. Thank you, sir. Honorable Minister of State for Science and Technology and Departments of Space and Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman ISRO and Secretary Department of Space, former secretaries of the department, invited dignitaries, respected dignitaries and invitees, I am very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan-3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. I would like to appraise three things here. The vehicle systems are in the continuous process of quality improvement, especially in the event of our human rating efforts towards making the systems reliable. Secondly, the payload also, capability of the payload also is improved by mission strategies as well as vehicle engineering approaches. We are in the process of increasing the launch frequency of this vehicle considering the national requirements as well as satellite demands. Here, so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards, enabling us to have 100% NDT, and the inherent pocket erosion characteristics are removed. The L100 stage Vikas engine, mostly it is 100% qualified to be the human rated engine with indigenously developed LET throats, and the pocket, the backward gas entry also is eliminated, and it is a perfect system. Yes, and CE20 stage also is perfectly, actually, sir. Good. So we will describe all those details later because of shortage of time. Yes, sir. I take this opportunity to thank all the mission executives because mission executives for all the supports all along the launch campaign process as well as the launch. Once the launch manifest is released and mission executives are identified, really this is a penance of so many across the ISRO centers, our launch vehicle centers, VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC, SHAR, URSC and SAC, along with all our industrial partners, major players to the small-scale industries who supply us with all the deliverables in time, quality products, the suppliers of chemicals, propellant ingredients, suppliers of avionics systems, and our own GOCO facility operators. Actually, the industrial manpower is really our ISRO's virtual manpower. Everybody's efforts went into this, and also the prayers and best wishes of all our seniors, retired executives, everyone's prayers and our own family members. I take this opportunity to pray God Almighty for all the blessings in the form of this success, which was the penance by the ISRO family for last 73 days. And my prayerful pranams for the successful continuous operations of the Chandrayaan spacecraft, for its safe and soft landing on lunar surface and further experiments. Thank you. Jai Hind.
respected Chairman ISRO, Center Directors, dignitaries and my team Chandrayaan 3. Very happy to note that our Chandrayaan 3 has been injected into an intended orbit with very close orbital parameters. Congratulations and thanks to LVM-3 team. And all our spacecraft health parameters are normal, including the power generations in both propulsion module and lander module. Our journey to moon has begun now for the most awaited soft landing. We'll be closely monitoring and controlling the spacecraft from ISRO Bangalore. Many critical events are lined up, starting from earthbound maneuvers, insertion into the Lunar's orbit, and separation of lander, and set of deboost maneuvers, and finally the power descent phase for a soft landing. I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors for entrusting me this opportunity, who have been the motivational and guidance force behind this mission. My special thanks to Chandrayaan 3 project executives, Associate Project Director Kalpana, Deputy Project Directors, Project Managers across the ISRO centers who have provided an excellent support in building the spacecraft. My special thanks to the expert committees for their constant guidance throughout the various stages of the project. I also thank the various work centers and industries who have contributed directly and indirectly to this mission. My special thanks to URSC council members, group directors, deputy directors across the ISRO centers, and looking forward for the soft landing with all your wishes and blessings from the God. Thank you. We have our Honorable Minister for Space, Minister of State for Space, Dr. Jitendra Singh ji, amongst us during this historic occasion of success of launching of LVM-3. So we would like to hear a few words from him. Over to you, sir. It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You would recall, Honorable Prime Minister had very recently said, sky is not the limit. And living by his words, I think the Chandrayaan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond. Ladies and gentlemen, this day today, the 14th of July 2023, is also a day of vindication. Vindication of the dream that Vikram Sarabhai saw 6 decades ago. He might have been short of resources, but never short of confidence. And when we see those pictures of a launcher vehicle being carried on the carriage of a bicycle, without any remorse, without any slightest embarrassment, that is because Vikram and his team had faith in themselves, faith in India's potential, faith in India's acumen. And today, here, we are vindicating and we are reiterating India's indigenous capabilities, living up to the ideal of Atmanirbhar Bharat. And before I conclude, ladies and gentlemen, as Mother India enters into the next 25 years of this Amrit Kal, she pledges to play a leading global role in the emerging world scenario of 21st century. Thank you and congratulations once again. Thank you, sir. We will also introduce the directors of the centers who have done all those great work of building the rocket, building the scientific instruments for Chandrayaan 3, the Chandrayaan spacecraft itself, and made all those critical systems, and also the agencies who are going to handle the rest of the mission part, the tracking and the ground stations and
So I request the directors of those centers to join. First, Director of Vikram Sarabhai Space. Good afternoon. This is the 10th mission, including the precise land. So with this mission, the mission of LVM-3, the successful mission is 100%. And this is the ideal vehicle for Gaganyaan. That we are incorporating in Gaganyaan, we have implemented here. Mark 3 has crossed the reliability of 0.9 and inching for. I take this opportunity to salute the entire community and all launch vehicle centers, industry partners for making the sub-assemblies and testing. In fact, this is the third year. You know, the realizing the stages has 3 LVM-3s in 1 year is a Herculean task. I ISRO centers for this. And I wish all the very best. We know that when the beginning has to be good. I wish all the very best to the Chandrayaan, the vastness of space, and for making a feather-like soft land. Good luck. Thank you. Good afternoon to all of you for Indian Space Program and a proud moment on this momentous occasion of the successful launch of the Chandrayaan 3. One spacecraft in the required orbit with the highest level of precision, LVM-3. After the 2 launches of LVM-3 vehicle in the record shortest time, today, once again, demonstrated the 7th successful launch. The entire spacecraft community has put wholehearted effort, realized a marvelous, great scientific satellite. Vehicle performance is as expected, as predicted. In fact, in which the satellite is launched shows the reliability of this vehicle. And we too have 4 liquid propulsion modules, 2 in the launch vehicle. The L110 stage, C-25 stage, it has performed extremely well along with all other vehicle systems. We too have 2 more propulsion modules, one for taking the spacecraft to the moon, another one for soft landing. I think it is already well integrated. The system health is very good. Today's success is the culmination of the dedicated, smart, and hard work of all the ISRO team members and the work culture of ISRO and the review process what we follow. I am sure all further mission operations will be a grand success and we'll have the successful soft landing. On this occasion, let me congratulate and compliment the members of ISRO team, our family members who have really sacrificed, the partners from industry and academia, and the various review fora. Thank you. Jai Hind. The Chandrayaan craft was built at the URO Satellite Center, so I request the Director of URC to speak. Good afternoon, ladies and gentlemen. I take this opportunity to first thank my colleagues from the Launch Vehicle Center for providing a textbook-like launch for Chandrayaan 3 on its journey towards moon. Thank you very much. And as Director LPSC and Director VSSC mentioned, realizing this kind of launch vehicle, third launch vehicle within a year's time is indeed a Herculean task. And thank you very much for the effort that has been put by all the members of the launch vehicle community and the industry supporting them. वैज्ञानिकों की खुशी देखते बन रही है और उस खुशी का ही प्रतिबिंब आप देश में
कोने कोने में देख रहे हैं, क्योंकि लोग आज बहुत उत्साहित है। चंद्रयान 3 को कहा उन्होंने टेक्स्ट बुक तरीके से हमने लॉन्च किया है, यानी एक एक बारीकी सही तरीके से बैठकर ये लॉन्च किया गया है, ऑर्बिट में चला गया है और इसी के बाद अगले कुछ दिनों इस चंद्रयान 3 पर नजर रहेगी। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पर अमिताभ पांडे एस्ट्रोनॉमर हमारे साथ स्टूडियो में है। तो डॉक्टर एस.के. ढाका, जो कि पूर्व वैज्ञानिक हैं, फिजिसिस्ट हैं, इसरो में कई प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं, ढाका साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। और डॉक्टर नरेंद्र भंडारी, सीनियर स्पेस साइंटिस्ट, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी, इस सफल प्रक्षेपण का और जिस तरह से ये ऑर्बिट में लॉन्च हुआ है, इससे हम एक भारतवासी के तौर पर कितने उत्साहित हों? हमारे वैज्ञानिकों ने जो ये बड़ा कदम सफलतापूर्वक उठाया है, उस पर आप क्या कहें? देखिए, ये आज तो हम केवल इसको स्थापित कर रहे हैं अर्थ ऑर्बिट में। चंद्रयान वो उसका फाइनल लक्ष्य है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का, वो अभी कई हफ्ते दूर है। तो इसरो तो बहुत एक्सपर्ट है अपने लॉन्चिंग में, हमारे रॉकेट बहुत अच्छे हैं और ये जो रॉकेट है मार्क 3, ये बहुत ही उत्तम रॉकेट है। तो इसमें तो कोई संदेह ही नहीं था कि हम इसको स्थापित कर पाएंगे अर्थ ऑर्बिट, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में, बहुत हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट है। फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा के कई हफ्ते में हम चांद पे जाएंगे और उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग होगी। वो बहुत क्रूशियल फेज़ है। तो हमें बड़ी खुशी है कि ये जो पहला स्टेप है ये बहुत अच्छी तरह पूरा हो गया। बिल्कुल। और अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर ट्वीट किया है। हालांकि वो फ्रांस में बेस्टिल डे परेड में शामिल हो रहे हैं, जहां पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का धुन और पंजाब रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट सब वहां बेस्टिल डे परेड में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसरो के उस ट्वीट पर, जिसमें उन्होंने कामयाबी पूर्वक इस सफल प्रक्षेपण को लेकर ट्वीट किया है, उस पर प्रधानमंत्री ने लिखा है कि चंद्रयान 3 ने एक नई कहानी लिखी है, एक नया इतिहास लिखा है, एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है और इन इंडिया स्पेस, और जैसे इट सोर्स हाई, जैसे वो ऊपर की तरफ भाग रहा है, इसी के साथ भारत की महत्वाकांक्षाएं अंतरिक्ष में बेहतरी की तरफ बढ़ने की, उन महत्वाकांक्षाओं को भी ताकत मिलती है। और ये भारत की उपलब्धियों पर सबसे बड़ा टेस्टमेंट है, उसकी सबसे बड़ी गवाही है। जिस तरह से हमारे वैज्ञानिकों के निरंतर मेहनत, अभ्यास और उनकी जो क्षमता है, उसकी भी गवाही ये सफल प्रक्षेपण देता है। और साथ ही उन्होंने लिखा है, आई सल्यूट द स्पिरिट एंड इंजेन्युइटी, यानी मैं उनके काम को, उनकी मेहनत को, उनकी ईमानदारी को सलाम करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चंद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग पर अभी अभी ट्वीट किया है। अमिताभ जी और ढाका जी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। डॉक्टर एस.के. ढाका, अगला कमेंट आपसे, क्योंकि हिंदुस्तानियों को बहुत उम्मीद है। आप तमाम साइंटिस्ट बताएंगे कि सफल लॉन्चिंग होना और फिर सफल लैंडिंग तक के बीच एक लंबा सफर है जो इस सैटेलाइट को अभी आगे पूरा करना है। लेकिन क्यों इस बार हम ज्यादा उम्मीदें बांध कर रखें, ये बताइए। मैम, सबसे पहले मैं आपको सबको बधाई देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, और स्पेशली जो हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आज करिश्मा कर दिखाया है इसको लॉन्च करके। ऑफ कोर्स चंद्रयान 2 से हमने बहुत कुछ सीखा है और चंद्रयान 2 में हमें जो फेल्योर हमें मिली, हमने उसको यूज़ किया, उन इंफॉर्मेशंस को, उस डेटा एनालिसिस को यूज़ करके आज हम इस मुकाम पे हैं कि हमारा जो सबसे पावरफुल इंजन LMV M3 M4 ये आसमान को चीरता हुआ, दहाड़ता हुआ, आज हमें जो फेज 1 है उसको हमने पार कर लिया है। हम फेज 1 को क्रॉस कर चुके हैं, उसमें पहुंच गए हैं। हमारा जो पहला पार्ट है वो पूरा हो गया। उसके बाद करीब 5 अगस्त तक हम जो लूनार ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में चले जाएंगे और उसके बाद फिर हम इंतजार करेंगे चंद्रयान की जो अपनी ऑर्बिट है उसमें जाने के लिए। और हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि उस डेटा से जो हमने गलतियां जो हमने वो सीखा है उसको हम यूज करेंगे और इस बार हमारी सॉफ्ट लैंडिंग होगी, 100% होगी। अमिताभ जी, आपने बात की शुरुआती सी बात से की थी कि कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट विज्ञान में फेलियर नहीं होता है,
वो आपके लिए अगली बार बेहतरी का प्रमाण होता है या फिर उसके लिए एक किताब है, वो आपके लिए एक जानकारी है? और उसी तरीके से इस बार बेहतरी की गई है। अब से कितने दिन बाद आप दोनों फिर मेरे साथ यहाँ पर होंगे और हम लोग सफल लैंडिंग को लेकर चर्चा करने वाले हैं, और तब तक कितनी उम्मीदें रखें अमिताभ जी और किस तरह से ये आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, वो ऐतिहासिक लम्हा भी हम दर्शकों को बार बार दिखा रहे हैं जब इसे लॉन्च किया गया। जी, हम 15 अगस्त के बाद अगस्त के आखिरी महीने में आखिरी हफ्ते में मिलेंगे, और इसमें जब लूनर ऑर्बिट में इंसर्शन हो जाएगा उसके पहले एक स्टेज आती है, जैसे अर्थ की ऑर्बिट से मैंने बताया ऑर्बिट बढ़ाते बढ़ाते फिर आके इसको जो फाइनल जो थ्रस्ट दिया जाएगा वो फिर अर्थ की ग्रेविटी से निकल के लूनर ग्रेविटी के एरिया में चला जाएगा। तो उसके बाद फिर लूनर ऑर्बिट में इंसर्शन होगा, तो वो पॉइंट भी एक थोड़ा क्रिटिकल होता है, तो वो सही ढंग से उसको हम पकड़ पाएँ और फिर मून वहाँ पे हमको वहीं मिले जहाँ पे हम पहुँचे हैं। ठीक है, तो ये तैयारी हमारी पहले से पूरी, इसमें कोई ज़्यादा शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। बस मून पे उतरने का जो काम है वो थोड़ा मुश्किल काम है, उसको भी हम इस बार सक्सेसफुली कर पाएंगे, इसकी पूरी उम्मीद। बिल्कुल। और अभी अभी प्रसून जोशी, जाने माने लिरिसिस्ट, उन्होंने मुझे एक कविता इस पर लिखकर भेजी है, तो अगर लॉन्च वाला वीडियो और मुझे साथ में दिखा दे तो वो कविता मैं पढ़कर आपको सुना दूंगी, क्योंकि एक कविता उन्होंने चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च पर लिखा है, और वो कविता उन्होंने अभी लाइव मुझे भेजा है, जिसमें वो ये कहते हैं, अंतरिक्ष में गूंज उठे हम चंद्रयान का गान लिए, चांद तिरंगे रंग में रंगा नई एक पहचान लिए, मेरे भारत के वैज्ञानिक तुम गौरव हो भारत का, ऊंचा माथा लिए खड़े हम सच्चा एक अभिमान लिए। उन्होंने अभी अभी एक कविता भेजी है और बहुत अच्छी कविता उन्होंने लिखी है, और भारत के वैज्ञानिकों ने जो अपने दम पर इसरो के पूरे सफर को आप देख लीजिए तो आपको वो तस्वीर मिल जाएगी जब पहली बार रॉकेट लॉन्च के लिए एक साइकिल पर पीछे रखकर उसे ले जाया जा रहा था। हौसले की गवाही है इसरो के वैज्ञानिक, बुलंद हौसलों की, और इसी के साथ ईमानदार मेहनत और पहल की वो कहानी लिख रहे हैं, और इसी कहानी के साथ वो विश्व के अंतरिक्ष के पूरे पैमाने पर सबसे ऊपर तक पहुंचने का डंका बजा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से इन वैज्ञानिकों ने पिछले, जैसा कि बताया गया वहां पर वैज्ञानिकों द्वारा, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने बीते कुछ महीने अपने समर्पित कर दिए इस पूरे प्रोजेक्ट को। ना वो घर जाते हैं, ना किसी से मिलते जुलते हैं, क्योंकि सारा का सारा ध्यान, काम, मेहनत, लगन वो सिर्फ इस मिशन पर लगाते हैं। और आज इसीलिए हिंदुस्तान को गर्व है अपने वैज्ञानिकों पर। अंतरिक्ष में एक बड़े उड़ान के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और प्रसून जोशी की कविता हमने आपको सुनाई। अन्य मेहमान जो हमारे साथ बने हुए हैं, नरेंद्र भंडारी जी, एक कमेंट जल्दी से आपसे लेते हैं, क्योंकि अभी इंतजार है सॉफ्ट लैंडिंग का, जब चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। पिछली बार कुछ आखिरी के सेकंड्स थे, धड़कनें बहुत बढ़ गई थी, लेकिन फिर कांटेक्ट छूट गया था। इस बार हमने पिछली बार में जो जो हमें लगा कि ये सब सुधारना है वो सब सुधार कर हम सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी में हैं। और जो दोनों मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है, सबको उम्मीद है, और जितने लोग मुझे मैसेजेस भी भेज रहे हैं, सबको उम्मीद है कि सॉफ्ट लैंडिंग सफल तरीके से हम करेंगे। आपकी हिम्मत और आपकी उम्मीद इसको लेकर क्या है? देखिए, जो चंद्रयान 2 था उसका ऑर्बिटर तो बहुत अच्छा था, अभी भी काम कर रहा है, लेकिन लैंडर और रोवर वो हमने नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से उनका डिज़ाइन किया था। अभी उसमें उनको ज़्यादा रोबस्ट बनाया गया है। पहले जो वेलोसिटी से हम उतरेंगे चांद पे, वो अब ज़्यादा वेलोसिटी भी हो उसकी तो भी वो मजबूत रहेगा। और सबसे मुश्किल काम है उसका ओरिएंटेशन। तो जैसा बताया गया है, अभी कई हफ्ते की दूरी है चांद पर पहुंचने में, परंतु ये सभी जो कंडीशन में वेरिएशन होता है, हर रोज़ एक जैसा नहीं होता और वेरिएशन होता रहता है। इन सब वेरिएशंस को ध्यान में रखते हुए अभी हमने लैंडर की डिज़ाइन चेंज की है। उसमें प्रोपेलर इंजन है और उसमें सेंसर्स हैं, उसमें
जो वेलोसिटी चेंजेस हो सकते हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए हमने एक मजबूत लैंडर बनाया है। तो उम्मीद तो यही है कि ये अच्छी तरह सॉफ्ट लैंड हो जाएगा। और रोवर तो वही है जो पहले था। और हम उस एरिया को जहाँ पर ये उतरेगा उसका अध्ययन करना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो चंद्रयान 1 है उसने बताया कि उस जगह पानी है, बर्फ जमा हुआ है। और बर्फ जैसे आपको पता ही है बहुत इम्पोर्टेंट केमिकल है, उससे हाइड्रोजन बन जाती है जो फ्यूल के काम आती है, एनर्जी जनरेशन कर सकते और हैं। इसीलिए डॉक्टर नरेंद्र भंडारी, देश भर में सब कॉशियसली ही अभी उम्मीदें लगाए हुए हैं। सबको ये पता है कि अभी तो बस शुरुआत है, आगाज है, अंजाम तक पहुंचना है। और फिर बताया जा रहा है 15 अगस्त के बाद, अगस्त के आखिरी सप्ताह में कभी भी इसके चांद पर लॉन्चिंग की तारीख तय हो जाएगी। और उस दिन फिर एक बार फिर ये मजमा लगेगा और हम सब उम्मीद और प्रार्थना करेंगे कि सफल प्रक्षेपण, सफल लैंडिंग हो चंद्रयान 3 का।